Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist of chemistry at Tabir Academy. Here at Tabir Academy, we try to give you an overview and explanation of the topics that are included in the syllabus of MDCAT by PMC. So the topic that we are discussing right now is chemistry of hydrocarbons. These are the main subtopics, and right now we are discussing the nomenclature of alkynes, the preparation and their reaction. After that, we will be moving forward to benzene and the molecular orbital treatment of benzene. Let's move forward to our current topic and our current slide, that is alkynes. So, preparation. How do we prepare alkynes? Dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Vicinal dihalides are the halides और they are the compounds जिनके अंदर दो नेबरिंग कार्बन, जैसा एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, सो दो नेबरिंग कार्बन के साथ हेलोजन होता है. एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन नहीं होते, दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर साथ साथ हेलोजन होते हैं. सो दिस इज अ कंपाउंड एंड इसको हम रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके बाद हमारे पास आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन वी गेट दिस एंड दिस इज एन अल्काइन. सेकंड मेथड इज डीहेलोजिनेशन, मतलब हम हेलोजन को रिमूव कर देंगे टेट्रा हेलाइड्स के साथ. सो हमारे पास दिस इज अ टेट्रा हेलाइड जिसके अंदर 4 हेलोजेंस मौजूद हैं. दिस इज ऑल्सो अ विसिनल हेलाइड. इसके साथ हमने मैग्नीशियम या जिंक को रिएक्ट करा सकते हैं. यहाँ पे वी रिएक्टिंग जिंक और हमारे पास एंड पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, अल्काइन. सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस. Alkanes are not very reactive. Why? Because their valency is satisfied. Alkenes are reactive, but alkynes are less reactive than alkenes. Why is that? Because जब हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होती है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो द कार्बन होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल टू रिएक्ट. ओके, इलेक्ट्रोफाइल आर द कंपाउंड्स और एटम्स जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव साइड सीक करते हैं. Alkynes give electrophilic addition reactions. However, they also give nucleophilic. Nucleophile means positive साइड जो सी है या पॉजिटिव सेंटर जो सा है वो अट्रैक्ट करते हैं. Reaction of alkynes. Hydrogenation means we are going to add hydrogen. So as you know कि alkynes के अंदर अगर हम hydrogen add करेंगे तो it will convert to alkenes, और alkenes के अंदर hydrogen add करेंगे it will convert to an alkane. कौन से elements जो से हैं as a catalyst use होते हैं? Catalyst are those elements जो speed up करते हैं process को. So nickel, platinum और palladium. फिर हमारे पास है हेलोजिनेशन. द नेम सजेस्ट वी आर गोइंग टू ऐड द हेलोजन. सो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव. क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं. दिस इज द कंपाउंड. द कंपाउंड इज कॉल्ड 1122 टेट्राक्लोरोइथेन. व्हाई इथेन? बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. और यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 1 2 3 4. सो 4 क्लोरीन. सो टेट्राक्लोरो एंड इथेन. हाइड्रोहेलोजिनेशन. अब हम हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं और हेलोजन भी ऐड कर रहे हैं. So what is the best way to do it? By reacting it with this compound, hydrogen iodide, hydrogen bromide or hydrochloride. Okay. Geminal dihalides are those halides जिनके अंदर एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन ऐड होते हैं. So this is the carbon और यहाँ पे हमारे पास दो हेलोजन उसके साथ अटैच हैं. So this is called a geminal dihalide. Hydration. Alkynes add water in the presence of mercuric sulfate and sulfuric acid at 75 degree centigrade. So ये दो हमने ऐड किया और उसके बाद हमारे पास this is the complete reaction. Please go through each and every step properly. Acidic nature of alkynes. In ethyne and terminal alkynes. What are terminal alkynes? Terminal alkynes वो हैं जिनके अंदर जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होती है ना, उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है. So those are terminal alkynes. A hydrogen attached with triple bonded carbon is slightly acidic. ये क्यों होता है? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. sp हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जिसके अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल सेम मेन शेल में एटम को मिक्स करके दो न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना देते हैं. So that is called sp hybridization of carbon which has 50% s character and hence is more electronegative, due to which hydrogen becomes partially positively charged and acidic. ये हमारे पास रिएक्शन है ड्यू टू इसका एसिडिक नेचर. हमने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम एसिटाइलाइड बना.
और एंड पे हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड, दैट इज अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। जब कलर्ड कंपाउंड्स आते हैं ना तो वो हम लोग मोस्टली उसको यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड का बनना। सो दिस रिएक्शन कैन डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन। These alkynides are used to separate, prepare and purify terminal alkynes. Aromatic hydrocarbons. So now we are going to talk about benzene mainly. Benzene and its derivatives are called aromatic. Aromatic word comes from aroma, means they have fragrance. Aromatic compounds have high carbon to hydrogenation. C6H6 is the formula of benzene, and hence molecular formula of benzene indicates it is highly unsaturated compound. Okay. Molecular orbital treatment of benzene. अब 6 हमारे पास हाइड्रोजन और 6 हमारे पास कार्बन है, सबके एक एक बॉन्ड है देर। तो यहाँ पे molecular orbital treatment of benzene हम चेक करेंगे। According to atomic orbital hybridization, each carbon in benzene is sp2 hybridized. What is being sp2 hybridized? हमने पीछे पढ़ा कि sp2 sp hybridization क्या होती है, सो वहीं से हमें आइडिया होगा कि sp2 hybridized भी क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 3 sp2 hybrid orbitals of each carbon of benzene. Formula regular cyclic hexagonal. Hexagonal is this 6 sides hexagonal framework. Unhybrid 2p2 orbital of each carbon forms a continuous sheath of the electron cloud. मतलब electron cloud है ना, वो it keeps on like wandering from here to here, overlap करता रहता है। रेजोनेंस क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कि यहाँ डबल बॉन्ड है, कि यहाँ डबल बॉन्ड है। This is called resonance. The different structures arranged as a result of resonance are called resonance structures. So these are resonance structures. दो साइंटिस्ट थे, एक केक्यूल और एक दीवार। इन दोनों ने हमें स्ट्रक्चर दिए। These two are from केक्यूल and these are from दीवार. Keccule structures are more stable than Devar's structures. The stability of benzene can be measured by comparing it with hypothetical compound 1,3,5 cyclohexatriene. So cyclo means it is going to be in a circle or in a cycle. Hexa means 6 और triene means they are saying कि ये अगर एक alkene होता तो double bond explains that. The expected heat of hydrogenation of 1,3,5 cyclohexatriene is minus 358.5 kilojoule per mole. Heat of hydrogenation क्या होती है? It is the enthalpy of catalytic hydrogenation of alkene, के उसकी bonds को break करने की क्या enthalpy होगी? Enthalpy कहते हैं internal energy of a system. So benzene plus 3s2 becomes cyclohexane और उसकी है minus 2 kilojoule per mole. Less heat of hydrogenation shows more stability. So यहाँ पे stability, जहाँ पे heat of hydrogenation कम होगी वहाँ पे stability ज़्यादा होगी. Resonance energy, the difference of energy 150.5 kilojoule per mole between the amount of heat actually released and that calculated based on Kekule's formula is called resonance energy. So इन दोनों का जो difference है ना, that is called resonance energy. The greater the resonance energy, the greater the stability. All the benzene looks highly unsaturated. It behaves like a saturated compound. Benzene gives substitution reactions, so you can add compounds or you can add atoms to it. Benzene usually gives electrophilic substitution reactions. Electrophile हमने पहले भी explain किया कि electrophile an atom or a compound that seeks the negative center. Addition reactions होते हैं. Benzene adds 3 molecules of hydrogen in the presence of a catalyst. Okay. So catalyst यहाँ पे है P. Toluene is more reactive due to the electron donating effect. के electron donate easily कर लेता है. Similarly, benzene adds 3 molecules of chlorine or bromine in sunlight. ये हमारे पास reaction है, chlorine के साथ reaction है. So this becomes hexacyclohexane. In case of toluene, this becomes benzyl chloride, and then benzyl chloride का reaction करें, this becomes benzyl chloride, and then this becomes benzo trichloride. So there are 3 chlorines. Okay. Reactivity order is the same. Fluorine is highly reactive and iodine is least reactive. Electrophilic substitution reactions of benzene and toluene due to the stable pi electronic cloud of benzene. It does not react with a weak electrophile क्योंकि उसका जो stable है, उसके जो cloud है, उसकी वजह से वो weak के साथ react नहीं करेगा. Hence powerful electrophiles are required, which are usually generated by special conditions and catalyst. In toluene, the methyl group makes the benzene ring more reactive due to the electron donating effect. General mechanism हमारे सामने है, that is this is an electrophile, slow reaction benzenonium ion. फिर उसके बाद ये जो सा है मूव कर जाएगा यहाँ पे, इस तरह एक फास्ट रिएक्शन होगा, तो ये होगा हेलोजिनेशन. क्या है?
हमारे पास है कि हमने हेलोजन ऐड कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड हो गया, क्लोरीन और फ्लोरीन और ब्रोमीन। उसके बाद नाइट्रेशन हमने HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड से हमने ऐड किया, NO2 ऐड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ऐड करते हैं, SO3H ऐड हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। Friedel-Crafts alkylation and acylation. The introduction of the alkyl and acyl group is called the Friedel-Crafts reaction. Okay, so this is the group and this is the reaction, this is the group and this is the reaction. Okay, electrophilic substitution reactions are summarized as follows. यहाँ पे आपके पास एक काइंड ऑफ एक समरी दी हुई है जहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मेशन क्या होती है, E प्लस ऑब्टेन हुआ बाय लुईस एसिड, E प्लस ऑब्टेन बाय लॉस ऑफ वाटर, किस तरह से हमने E प्लस को ऑब्टेन किया है। अच्छा, यहाँ पे अल्काइलेशन का हमने पढ़ा और एसाइलेशन का भी हमने पढ़ा। Substituent effects on benzene. The position of the second group in the ring depends on the nature of the first group. For example, the second substituent may enter ortho, para or meta position. Benzene की कुछ benzene में the double bond is actually like we consider it कि यहाँ पे double bond है कि यहाँ पे double bond है, तो we say कि this position is called ortho, this position is called para, this position is called meta. So हमने उसको naming की हुई है। Ortho-para directing groups, activating groups, these groups release electron density towards the ortho and para position of benzene. Hence, they enhance the reactivity of benzene ring except for halogens. Substituent effects on benzene. The position of the second group in the ring depends on the nature of the first group. For example, the second substituent may enter ortho, para or meta depending कि पहला जोन सा है कौन सा ग्रुप वहाँ पे अटैच है, functional group कौन सा है वहाँ पे। Ortho-para directing groups, these groups release electron density towards ortho and para position of benzene, hence they enhance the reactivity of benzene rings except for halogens. Meta directing कौन से होते हैं? Meta ये example है ortho para directing की। Meta directing deactivating groups, these groups withdraw electron density from ortho and para, वो सिर्फ मेटा पे अटैच होता है, जो नया सेकंड हमारे पास ग्रुप आएगा वो सिर्फ मेटा पे अटैच होगा। Hence incoming electrophiles will prefer to attack at meta position. These groups decrease the chemical reactivity. वहां पे हमारे पास दो पोजीशन अवेलेबल हो रही हैं तो reactivity is automatically increased. यहाँ पे एक पोजीशन अवेलेबल होगी तो ऑटोमेटिकली the reactivity decreases. ये है हमारे पास COOH, CHO, SO3H. So reactivity, relative chemical reactivity alkenes की ज्यादा है, alkynes की उससे कम है, benzene की alkyne से भी कम है और alkane की सबसे least है। So that was all for this topic. I hope everything is clear to you. Now please, if you would like to increase your knowledge or test your knowledge, you can head to Tabir Academy's website and you can check your knowledge and check your information by attempting the MCQs. अब MCQs को attempt करें और इन वीडियोस से गाइडेंस लें, अच्छे से प्रिपेयर करें और MCQs को अटेम्प्ट करके ताबीर अकेडमी की वेबसाइट पे अपनी नॉलेज को चेक करें ताकि यू शुड नो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।